Assalamu alaikum everyone. Today my topic is prime numbers. Have you ever wondered what are prime numbers? Or let me give you one example. Have you ever seen such question in which 564 or any other number is written and you are being asked that tell us whether it is a prime number or not? Then don't be confused. This video is for you. First of all, before jumping on to the bigger numbers, I just want to explain what are prime numbers. ये prime numbers होते क्या हैं? Numbers से तो हमें समझ आती है कि digits, counting is there and counting begins from zero and it is infinite. It just goes on. और प्राइम क्या होता है? और प्राइम को जब हम नंबर्स के साथ अटैच कर देते हैं तो वो कौन से नंबर्स बनते हैं? देखें, prime numbers are those numbers which have only two factors. ठीक है, प्राइम है ना, खास बात है, कोई खास नंबर है और वो खास नंबर कोई दो डिजिट्स हैं. दो डिजिट्स कौन से हैं? एक वो अपने आप से डिविजिबल हो रहा है, ठीक है, और एक वो वन से डिविजिबल हो रहा है. फाइन. एंड इफ आई टॉक अबाउट I divide this number by itself, okay, or I divide it by 1, then yes, it is divisible. Okay, it shows that it is divisible by 1 and it is divisible on itself. Other than these two figures, other than these two factors, आपको 2 किसी और टेबल में नजर आता है? Can you see 2 in the table of 2, in the table of 3? For example, you multiply 3 by 1 and you get the answer that is particularly 3. इसी तरह से आप जो है 4 के टेबल में देखें, 5 के टेबल में देखें, 6 के टेबल में देखें, सो ऑन, काउंटिंग गोज ऑन. लेकिन आपको 2 कहीं पे भी और नज़र नहीं आएगा. 2 अपने ही टेबल पे नज़र आ रहा है, आपको अपने ही ऊपर डिवाइड होता हुआ नज़र आ रहा है. ठीक है, तो ये एक वाहिद, इसकी एक इम्पॉर्टेंट और ख़ास बात ये है कि ये एक ऐसा वाहिद प्राइम नंबर है जो कि इवन है. दिस इज द ओनली नंबर विच इज इवन एंड दिस इज प्राइम नंबर ऑल्सो. ठीक है, लेट्स मूव टूवर्ड्स 3. आप 3 को देखें. क्या आपको 3 किसी और टेबल में नजर आता है? कैन यू सी 3 इन एनी अदर टेबल? 3 के टेबल में ही आता है. इट इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड ऑन द अदर हैंड इट इज डिविजिबल बाय 1. तो क्या ये कंप्लीट हो रहा है एज पर द डेफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर्स? कैन यू सी दैट इट इज डिविजिबल बाय 1 एंड इट इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ? Other than these two factors, we cannot see 3 anywhere else. Let us move towards this number 4. Now let me show you one thing. This 4 is divisible by which, how many numbers? You can see 4 in the table of 2. Before the 2, you can also see number 4 in the table of 1. Okay. Other than 2, you cannot see it in 3, but you can see it again in the table of 4. So, see, it is having more than two factors. That's why it is composite number. And on the other hand, it is even also. And previously I have told you कि prime numbers में सिर्फ एक ऐसा number है जो कि even भी है. ठीक है, I'm putting a star on it. And this is even, and that is 2, which is having only two factors, divisible by itself and divisible by 1 only. And after that, 4 is a composite number because it is having more than two factors. Okay, and now let's come back to the digit 5. सिंपल इज दिस. आप अपने माइंड में फौरन से डिजिट को जब देखें तो आप ये ले आएं कि ये कौन कौन से टेबल में आता है. ठीक है, ये डिविजिबल या हो रहा है 1 पे या ये अपने ऊपर डिवाइड हो रहा है. तो दो फैक्टर्स हैं 5 के. तो ये क्या हो गया आपका? दिस इज अगेन your prime number. This 3 was also your prime number. Okay, now we are coming back on the next digit, that is 6. Look, 6 तो सिंपल जो आपको मैंने रूल बताया, इसको डिवाइड करें. ये किस टेबल में आता है? 1 के टेबल में तो आता है. ठीक है, ये 2 के टेबल में भी आता है, ये 3 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में नहीं आता, लेकिन 6 के टेबल में भी आता है. तो इट इज हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स. जिसके भी मोर देन टू फैक्टर्स हैं उसको एक्सक्लूड कर दें. दैट फिगर, दैट नंबर
दैट डिजिट इज नॉट पार्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स का हिस्सा सिर्फ वो नंबर है जो अपने ऊपर डिवाइड हो रहा है और वो 1 पे डिवाइड हो रहा है, बस दो जगह पे वो मौजूद है, इसके अलावा वो पूरी काउंटिंग में कहीं पे भी नहीं है। दिस इज द वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखें, इसको हम क्रॉस कर देते हैं। नाउ कम बैक ऑन द नेक्स्ट डिजिट दैट इज 7। अगर आप 7 को देखें तो क्या आपको ये 1 के टेबल के अलावा और अपने ही टेबल के ऊपर या अपने ही ऊपर डिवाइड होने के अलावा कहीं नजर आता है? यू कैन नॉट सी इट एनीवेयर एल्स, सो दिस इज अगेन अ प्राइम नंबर। बट व्हाट अबाउट 8? Yes, 8 is divisible by 1 also. It comes in at the table of 1, in 2, 3 is not having it, 4 is having it, and 8 itself is having it. So this is not a prime number. Prime number की जो एक छोटी सी टिप है वो ये है कि अगर आपके पास 0 से 1 तक नंबर लिखे हुए हैं या आपने फाइंड आउट करने हैं नंबर्स, तो आप वो नंबर्स फाइंड आउट करेंगे जो अपने ही टेबल में बस एक दफ़ा आ रहे हैं और अपने ही ऊपर डिवाइड हो रहे हैं, वो किसी और टेबल में आपको नज़र नहीं आते। जैसे कि 9 को आप देखें, 9 आपको 3 के टेबल में नज़र आता है, 1 के टेबल में नज़र आता है, 9 अपने ही टेबल में भी नज़र आता है। सो मोर देन 2 फैक्टर्स, तो ये प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन को जो है वो उसको एलेबोरेट नहीं कर रहा, ठीक है। उसकी डेफिनेशन ही यही है कि डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड डिविजिबल बाय 1, बस वहीं पे आपके जो फिगर इस डेफिनेशन को स्टैंड करेगा, दैट नंबर, दैट पर्टिकुलर नंबर इज अ प्राइम नंबर। इफ यू लुक एट नंबर 10, तो 10 जो है ये भी आपका प्राइम नंबर नहीं है। वाई? फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स कमिंग स्टार्टिंग, वी विल स्टार्ट फ्रॉम टेबल 1, 1 के टेबल में आ रहा है, 2 के टेबल में आ रहा है, 4, 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में 10 नहीं आता, लेकिन 5 के टेबल में आता है और उसके बाद ये वापस 10 के टेबल में आता है। लुक, 1 2 3 4, सो इट इज हैविंग 4 फैक्टर्स। लेकिन हमारे प्राइम नंबर्स की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि वो नंबर जिसके दो फैक्टर्स होते हैं, सिंपल इज दैट, जिसके दो फैक्टर्स हैं वो प्राइम नंबर है, जिसके दो से ज्यादा हैं वो कंपोजिट नंबर है, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ प्राइम नंबर। यहाँ तक तो हमने बात की, 0 से 10 को हमने देखा, ठीक है। और अगर हम इसको मजीद एलोबरेट करेंगे कौन कौन से जो नंबर्स थे वो हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं, लेट मी टेक दिस ग्रीन कलर। 0 and 1 are out of this game, they are neither prime nor composite, fine. 2 is only even number which is prime, fine. So this is 2 is your prime number, 3 is your prime number, then 4 is not, cancel out, 5 is your prime number, 6 cancel out, 7 is your prime number, and 8 9 10, these three figures are not prime numbers. So here we are having 2 3 5 and 7. Now I am coming back to the definition of prime numbers, which tells us that two factors only and divisible by 1 or itself. अब देखें, I am having one table over here. 0 is neglected over here, but 0 is a part of this 1, that 0 and 1 they both are neither prime nor composite. उसके बाद आप देखें टेबल में 2 आपका प्राइम नंबर है, क्यों? आपने हर नंबर, आप टेबल को याद नहीं कर सकते, सिंपल, यू कैन नॉट मेमोराइज, यू कैन नॉट क्रैम द टेबल, व्हाट यू कैन डू इज टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट, हाउ टू आइडेंटिफाई द प्राइम नंबर्स। आपने एक नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है, 2, आपसे पूछा जाता है एमसीक्यूज में कि टेल अस 2 इज प्राइम और नॉट, ठीक है, 2 इज आइदर प्राइम और कॉम्पोजिट, तो अब आपने उसमें मेमोराइज किया हुआ तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टे नहीं करेगा। और एग्जाम का प्रेशर इतना होता है कि यू कैन नॉट रिकॉल इवन कि इतना छोटा सा माइनर सा क्वेश्चन भी आप रॉन्ग करके आ सकते हैं, ठीक है। टू टू स्टे अवे फ्रॉम दैट मिस्टेक एंड रिग्रेट कि हमें इतना माइनर सा क्वेश्चन भी नहीं आया था, हम उसका आंसर नहीं कर सके, अटेम्प्ट नहीं कर सके, तो उसके लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट। देखें, इसका तरीका यह है कि आपके पेपर में सामने लिखा हुआ है 2, अब आपने क्या करना है, पूछा गया है कि ये प्राइम है या नहीं है, आपने क्या करना है, आपने अपने माइंड में प्राइम की डेफिनेशन लेके आनी है। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। देखें, 2 सिंपल, क्या करें, 2 के कौन कौन से टेबल में आता है, डिविजिबल बाय 1 है और डिविजिबल बाय इटसेल्फ है, इसके अलावा तो हमें 2 कहीं पे भी नजर नहीं आता, सो यू आर गोइंग टू चूज इट एज प्राइम नंबर। सेम केस विद 3, देखें 4 क्रॉस्ड, 5 प्राइम नंबर है, 6 नहीं है, 7 8 9 10 दे आर कैंसल्ड आउट। अब बारी है 11 की, ठीक है, 11 प्राइम नंबर है, okay, the same two rules, two factors of 11 are there,
12, जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर हैं वो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। और अब 13 को देखें, 13 के सिर्फ दो ही फैक्टर्स हैं, या तो ये अपने टेबल में आता है, अपने आप से डिवाइड होता है, या ये 1 के टेबल में आता है, मतलब 1 के टेबल में आता है या अपने टेबल में आता है, इसके अलावा तो ये किसी टेबल में भी नहीं आता। सिंपल। तो वहाँ से हमने ये जो है कंक्लूड कर लिया कि 13 जो है वो प्राइम नंबर है। 14, 15, 16 ये तीनों 2 के टेबल में भी आ रहे हैं, 1 के टेबल, अच्छा 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 के टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में आते हैं, 4 के टेबल में आते हैं, 5 के टेबल में आते हैं रैंडमली, मतलब 14 कहीं पे आ रहा है, 15 आ रहा है, 16 आ रहा है, बट दे आर कमिंग। ओके, सो दे आर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है, जिसके भी दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं, दे आर नॉट prime numbers. Then so on. 17 is a prime number, 18 is not prime number, 19 is a prime number, 20 is not, 21 is not, 22 is not, because it also comes in more than two tables, or it is having factors which are more than two, 23, and so on. This table is in front of you. फाइन। अब पेपर में आपके डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि ओके राइट और चूज। अगर एमसीक्यू बेस्ड पेपर है तो उसमें लिखा होगा कि 30 से 40 के दरमियान में कौन कौन से प्राइम नंबर्स आते हैं। ऑप्शंस में आपको डिफरेंट ऑप्शंस दी होंगी। अब देखें 30 से 40 के दरमियान कौन कौन से प्राइम नंबर्स आते हैं। अगर आप इस टेबल को देखें तो 30 और 40 के दरमियान में सिर्फ दो प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, 31 एंड 37। लेकिन ये बात आप वहां पे during your exam, when you are sitting in an examination hall, how you will identify these two figures। देखें इसका तरीका ये होता है कि आप रफ साइड पे जाएं, 30 राइट करें, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 राइट करें, और उसमें कैंसल आउट करते जाएं कि कौन से जो हैं वो डिफरेंट टेबल्स में आते हैं या एक दूसरे पर डिवाइड होते हैं, या सिंपल ये करें कि जिसके दो फैक्टर्स हैं, जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो रहा है, जैसे 31 है वो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होता है या वो 1 से डिवाइड होता है, इसके अलावा 31 जो है वो कहीं पे भी नहीं आता, ठीक है। 32 भी आता है, 33 भी 11 के टेबल में आता है, 34 भी आता है, 35 भी, 36 भी, 37 एक ऐसा अलग नंबर है जो कि या अपने ऊपर डिवाइड हो रहा है या 1 के साथ डिवाइड हो रहा है। नो वेयर एल्स इट इज सीन एवर। सो यू आर गोइंग टू चूज द ऑप्शन, जो 4 ऑप्शन में आपको दिए गए होंगे उनमें जहां पे भी 31 और 37 लिखा होगा, यू आर गोइंग टू पिक दैट। अगर आपके क्वेश्चंस 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में या डिफरेंट जगहों पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द प्राइम नंबर्स बिटवीन दीज टू पर्टिकुलर नंबर्स, तो वहां पे यू हैव टू elaborate it by writing the numbers and cancelling out and choosing how many numbers are having two. So this is the complete table which is indicating that which numbers are prime and which numbers are composite. Okay, so this table, this is starting from number 1 and it's still 100. Here I am having few questions for you, that what are the numbers, what are the prime numbers from 1 and 20. So how you are going to elaborate it. For example, in front of you I'm going to write the answer of it, how I am going to choose. First of all, 1 we know that it is neither prime nor composite. So I'm going to neglect it. Okay. Then number 2 is the prime number, only prime number which is even. Then we will move towards 3. 3 counts, 3 is divisible by itself and divisible by 1. Then I will look at number 4. Okay, number 4 is divisible by 1, it's divisible by 2, it comes in its own table, it is divisible by itself also. So it is having more than 2 factors. So we are going to neglect that. Then comes 5. Yes, 5 is divisible by 1 and by itself only. Okay. Then comes 6. 6. No, we will not write it. Write 6 because 6 is divisible by 1 also, 2 also, 3 also, and it comes in its own table also. So it is having more than 2 factors. We are going to neglect that. Then comes 7. Okay. 7 is a prime number because it is divisible by 1 and by itself only. 8 is not prime number. Then 9 is also not, 10 is also not. Then there comes 11. 11 is a prime number. 12 is not a prime number because it is having more than 2 factors. Then there is another number, that is 13. This is also a prime number. 14 comes in the table of 7 also. It is divisible by itself also, and it is divisible by 1 also. So it is having more than 2 factors. We will not write it. Same is the case with 15. Same is the case with 16. Then there comes 17. 17 is a prime number because it is divisible by itself, okay, and by 1 only. Then 18. 18 is not a prime number
ओके, इट इज हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स। वाई? क्योंकि वो वन के टेबल में भी आ रहा है, टू के टेबल में भी आता है, थ्री के टेबल में भी आता है, ठीक है, सिक्स के टेबल में भी आता है और अपने टेबल में भी आता है। ओ माई गॉड, सो मेनी फैक्टर्स, सो हाउ वी कैन कॉल it that it is a prime number? No, it's not. Then there comes 19. So 19 is a prime number and 20 is not. So these are the numbers which are prime numbers from 1 and 20, from 1 till 20 actually. Okay, what is the sum of two prime numbers? Okay, let me take two prime numbers. I am taking one prime number 2 and other prime number is 3. When I add them, the answer is 5. Okay, let me take another prime number. For example, I am taking 3. When I add it with 5, the answer is 8. Okay, then let me take another prime number. I am taking 5, and when I am adding 5 with 7, then what is the answer? Count it. 12. So look here. Can we say this? So on. It goes on. Can we say that the sum of two prime numbers is only like prime number or its composite number? What can we say? What can be the answer? If the question is that what is the sum of two prime numbers, then we will say that sum of two prime numbers can be prime number. Okay. Look, 5 is a prime number. It can be prime or it can be composite like 8 and 12. तो जो प्राइम नंबर्स का सम है, आप किसी भी प्राइम नंबर को उठाएं, उनको ऐड करते जाएं, तो दो तरह के आंसर्स आएंगे। कंपोजिट नंबर्स भी आपके पास आएंगे और सिंपल प्राइम नंबर्स भी आएंगे। तो सम की जब भी बात होगी सम की, तो सम में दोनों चीजें आ सकती हैं, प्राइम नंबर्स भी आएंगे और कंपोजिट भी आएंगे। तो इसका आंसर ये है, द सम ऑफ प्राइम नंबर्स कैन ईदर बी प्राइम और composite. Okay, so both of the options are found when we do sum of any of the two prime numbers. Okay, then I am having one more question, that what is difference between two prime numbers? Difference means simply subtraction. When I subtract any two numbers, any two prime numbers, then the answer is neither prime nor composite, because if I like do like this, 2 minus 3, then the answer is minus 1. So it is particularly an integer. It is not a prime and not even composite. Okay, so difference, when we talk about difference between two prime numbers, it is neither prime nor composite. What is the only even prime number? So we are done with it, that 2 is the only even prime number. Okay, what is the sum of prime numbers from 60 to 80? Okay, look here, it is also a very interesting question, and I have seen this question somewhere in any exam, that what is the sum of prime numbers from 60 to 80? Now look here, go up 60 to 80. So we will begin from here, 61 till 80. They're saying that what is the sum of the prime numbers. They're not saying the sum of all the numbers which are present between 60 and 80. So we have to identify what are the prime numbers, like 61. So you will be writing from 61 till 80 all the numbers. You will cancel out the numbers which are having more than two factors. Simply choose the numbers which are only divisible by one or by themselves. Then you're going to add. Now 61, 67, 71, 73, and 79 will be added, and then you will get your particular answer. Now look here, there is question number 6, which is saying that how can you find the larger number? Okay, this is the same question which I when I started giving you demonstration on this prime numbers topic, I just gave you an example. For example, 567 is given to you or any other number is given to you, a larger number, then how you will find out whether that number is prime or. So, tips and tricks to identify the larger number, whether that particular number is prime or not. What are you going to do? Tip number one is that add all the digits in the given number. For example, the given number is 563. So, step number one is to add all the digits. 5 plus 6 plus 3, you are going to add them, and the answer is 14. So, step number two says if the given number or the answer after adding all the digits
that number is divisible by 3. For example, I am going to divide this 14 by 3. So this shows that it is not divisible. It is not divisible. Let me write here that it is not divisible by 3. This shows that 563 is not a prime number. So this shows not a prime number if it is not divisible. And if, on the other hand, it is divisible by 3, then that particular number which was given to you, that is a prime number. For instance, another number, another example which I have taken is 342. So what was the step number 1? To add all the digits which are given in this number, 3 plus 4 plus 2, and answer is 9. So we are going to divide 9 by 3, so it is divisible. Answer comes 3, so it is divisible by 3, hence it is the prime number. Stop here and listen to me. जब भी आपके पास कोई लार्जर नंबर दे दिया गया है, 3 फिगर्स नंबर है, 4 फिगर्स नंबर है, जैसा भी नंबर है, और आपसे ये पूछा गया है कि टेल अस दैट दिस नंबर इज प्राइम और कंपोजिट, ठीक है, या सिंपली पूछा गया है कि ये प्राइम है या नहीं है, तो आपने कैसे फाइंड आउट करना है? कीप 2 स्टेप्स इन योर माइंड. आपके पास जितना भी बड़ा नंबर दिया गया है, आपने उसके हर डिजिट को प्लस करना है, ठीक है? आपने प्लस किया, आपके पास एक आंसर आएगा ऐड करने के बाद, उस नंबर को आपने 3 के साथ डिवाइड कराना है, एंड इट इज यूनिवर्सल ट्रुथ, इट इज अ फैक्ट दैट यू हैव टू डिवाइड दैट आंसर बाय 3. आप उस किसी और नंबर के साथ उसको डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है? रूल इज रूल. आपने पहले तो बड़े नंबर के तमाम डिजिट्स को सेपरेटली उठा के आपने प्लस किया, आपके पास एक छोटा सा कोई फिगर आएगा, बड़ा भी आ सकता है, जैसा भी फिगर आएगा, आप उस नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे. अगर वो 3 से डिवाइड हो जाता है, तो वो आपको जो ऊपर बड़ा नंबर, लार्जर नंबर दिया गया था, वो प्राइम होगा. अगर वो 3 के टेबल में नहीं आता और वो 3 से डिवाइड नहीं होता, तो आप का जो वो नंबर है, जो ऊपर लार्जर नंबर आपको दिया गया था, दैट इज not a prime number. Okay, I'm having one more example. For example, the question is, or the number, the larger number is 456, and you have to tell either is prime or not. You are going to add each digit, 4 plus 5 plus 6. Okay, you, I have written 2 over here, then again let me write it, let me correct. Okay, sorry for inconvenience, I have changed the number just to give you the better example to check either the number is prime or not. I have changed the number into 352. When we add 3 each digit, we are going to add each digit, 3 plus 5 plus 2, then the answer that comes is 10. नाउ एज पर स्टेप नंबर 2 हम क्या करेंगे कि हम इस 10 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ, जो कि डिवाइड नहीं होता. सो दिस शोज कि 10 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, हेंस दिस गिवन नंबर वी शुड चेंज इट हियर टू 352 इज नॉट अ प्राइम नंबर. अब देखें, दो एग्जांपल्स हमने उठाई. 342 जिसमें आपका जो डिजिट्स को प्लस करने के बाद एक फिगर आ रहा था 9, वो 3 पे डिवाइड हो रहा है, तो वो प्राइम नंबर है. सेकंड में हमने एक और लार्जर नंबर लिया और उसमें हमने उसके डिजिट्स को प्लस किया, आंसर वाज 10. जब उसको डिवाइड किया तो वो डिवाइड नहीं हो रहा था, देन वी केम टू नो दैट इट इज नॉट अ प्राइम नंबर. इन फ्रंट ऑफ यू देयर आर 2 एग्जांपल्स जिसमें आप लार्जर नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं. Okay, just wrapping up all the discussion from the beginning till the end, हमने ये कॉन्सेप्ट सीखा है कि what are prime numbers in actual. प्राइम नंबर्स का जब वर्ड भी हमारे सामने आए तो हम हमें फौरन से ये आइडिया हो जाए कि what are the prime numbers. चाहे वो 100 से above की बात की जाए या 100 below 100 बात की जाए, you should have a clear concept about it कि प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन सिर्फ यही कहती है कि that number is divisible by 1 and by itself only. It is having only 2 factors, not more than 2 factors. Okay, I hope so this short video can make up your life while understanding the concept of prime numbers at any stage, at every stage of your life, whenever you face the questions of prime numbers in front of you, either they are your MCQ based questions or detailed part of your exercises of your maths books. Okay, stay connected, I'll be sharing more conceptual videos as well. I wish you good luck. Thank you.